Today I will do something with respect to a very important subsection on the topic's name is actually Advanced Algebra. Okay, the topic's name is Advanced Algebra. Today's date is 8/2/2024. ओके, तो एडवांस अलजेब्रा में आज टॉपिक में कुछ स्पेशलाइज चीजों में जाएंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है. ठीक है, थियोरी ऑफ इक्वेशन रिलेटेड सम थिंग्स एंड दोज थिंग्स. इसके लिए कहां से पढ़ाई करना है? एक है प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट ईयर. आज जो होगा analysis. First I will do analysis obviously. 3 नंबर में क्या जाएगा? 3 नंबर में जाएगा some types with their respective algorithms. तो चलिए शुरू करते हैं. First of all, theory of equation is the very algebra means मैं जिस पर मैं काम करूंगा theory of equation. दूसरा है solution systems and number of solution of a system and algebraic curves also. टाइप 1 में चलेंगे. मान लीजिए इक्वेशन ऐसा है. Greater than 0. Okay. So find x. This is an advanced level question, so we'll try to solve it in an easier way. Wavy curve. The wavy curve method is the actual name, but we will do it without the wavy curve also. आसान तरीके से करने का कोशिश करते हैं. सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? Today we will do theory of equation. Okay. Next is, so first you have to do what are the things. Let's put everything equal to 0, whatever. So x minus 3 equal to 0. So x equal to plus 3. In that way, the values of x will be 3 minus 4 plus 9 minus 2 plus 3.5. Okay. So putting it in order, minus 4, minus 2, 3, 3.5 and 9.
ओके, ये आपका काम हो गया। सो -4, सो इन एन ऑर्डर, तो पहला आपको लिखना है x लेस देन -4, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन होगा -4 लेस x लेस -2, इसकी या इसके बीच में, फिर -2 लेस x लेस 3, देन 3 लेस x लेस 3.5, ये हो गया। देन 3.5 लेस x लेस 9, एक हो गया। एंड लास्टली इट इज x ग्रेटर देन 9। 1 2 3 4 5 6, जितना सोल्यूशन उससे एक ज्यादा होना चाहिए। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 5, हियर 6। ओके, x less than -4, let it be a very big negative number, let it be -infinity। -infinity लिया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 5 माइनस हो गया। लेकिन 5 माइनस मीन्स अल्टीमेटली माइनस, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट नेगेटिव 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 इज नेगेटिव, तो ये वैलिड है? नो, इनवैलिड जोन, एज result is positive, sorry, as a result is negative but required result is positive। ये एकदम आसान है। क्लियर? दूसरे केस में -4 टू -2, ठीक है, लेट इट बी -3, और -4 टू -2 -2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन टेक एनी वैल्यू -4 से लेके -2 तक। सो यू कैन टेक अ -3 ऑल्सो, -3 भी चलेगा। -3 क्या हो गया? -6 नेगेटिव, -3 + 4 पॉजिटिव, -3 - 9 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, -3 - 5 ये एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, 3 और 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव क्या देगा? नेगेटिव, और सॉरी 4 नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड देयर इज अनदर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव। सो हियर 4 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, अल्टीमेटली इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर में और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हर ऑल्टरनेशन में या yes or no, so this would be no, yes, no, yes, you can check it with any other values also। so valid reason क्या है? सिर्फ आपको एक ही निकालना है, मेरा स्पेशल ट्रिक है, just find one and the rest will come like this, ठीक है। तो बाकी क्या होगा भाई, बताइए। So the final solution region is -4 लेस x -2, कॉमा, जैसे भी लिख सकते हैं यूनियन की तरह, यूनियन 3 जोन, ठीक है। अगर पहला वाला जोन में हो जाता तो यहाँ पर
भी आंसर होता है 3 पॉसिबल जोन्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं, दिस इज मे बी x minus 3 x plus 4 x minus 7 लेस देन 0। तो क्या होगा, x का 3 वैल्यू हो गया -4 3 एंड 7। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे, x लेस देन -4 से भी छोटा, फिर -4 is x लेस 3, then 3 लेस x लेस 7 and then x greater than 7। हमें सिर्फ एक चेक करना है। देखिए यहाँ पर मैं इसको चेक करेंगे कि ये बीच में एक 0 वैल्यू होगा, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 4 पॉजिटिव, 0 - 7 नेगेटिव। दो नेगेटिव क्या देता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दिस, सो दिस इज एन इनवैलिड रीजन, क्योंकि ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इनवैलिड हुआ तो ये भी इनवैलिड, दिस वैलिड, दिस वैलिड। सो बिना देखे एक सम करके वी कैन सॉल्व एनी बिग प्रॉब्लम। वेवी का मेथड एগুলো দেয়া থাকে। टाइप 2। अब आते हैं x to the power 4 minus 7x to the power 6 plus 8x cube equal to 0। ठीक है, इसमें how many roots are imaginary, ये अगर सवाल पूछ लिया तो कैसे करेंगे। Obviously if you try to solve x cube कॉमन लेके ये सब करके, it's a very big thing। बिना कॉमन लेके बिना कुछ किए डायरेक्ट करेंगे। स्टेप 1, इन पावर्स को बड़े से छोटे में सजाइए, इक्वल टू 0। ओके, बड़ा से छोटा में ये पावर सज गया, आसान है। देन इसे हम लोग लेंगे f of plus x। हाउ मेनी साइन चेंजेस, दिस टू दिस, ओनली वन साइन चेंज। देन वी फाइंड आउट f of minus x। अब क्या करेंगे, x की जगह पर एवरी टाइम वी विल पुट अ -x। -x means -7x to the power 6, this will be plus, ये -x है, so all odd powers will change their sign, so this will be sorry minus, तो माइनस से प्लस एक चेंज, यहां से यहां दूसरा चेंज। ओके, so two sign changes, तो पॉजिटिव रियल रूट 1, नेगेटिव रियल रूट 2। टोटल कितना रूट होना चाहिए, 6। टोटल 6। अब इमेजिनरी रूट ऑलवेज हैपन इन पेयर, हमारे लॉजिक से ऐसा तो होना चाहिए 1 2 और 6 - 3 यहाँ पर 3 हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो इमेजिनरी पेयर ऐसे होता है, मींस a प्लस i बीटा अल्फा माइनस i बीटा, ऐसा टाइप का रूट होगा। सो ये एक लॉजिक है
then there is a next combination also can possibly happen. Okay, so what is the maximum? ये 1 से नीचे नहीं जाएगा और ये भी डबल डबल में कम होगा. 1 0, even in that case that is odd. 5 only cases. Okay, so 3 और 5 के बीच में only acceptable value is 4 in this kind of cases. So imaginary root in this case is either 3, which is or 5 according to the formula. So the acceptable value will be 4. So 4 number of imaginary roots are there. Okay. Max mean formula means x greater than equal to 3, x less than equal to 3. So x equal to 3 is the acceptable value. So here also it is more than 3 but less than 5. So it is roots can be greater than equal to 3, roots can be less than equal to 5. अब दोनों ही तो acceptable नहीं है. So the only the acceptable value in between is 4. So can you please explain the last part once again? Last part means if for example ऐसा हुआ कि positive root आ गया 6, negative root आ गया 4 and imaginary root आ गया 4. Okay. So combinations ऐसे भी change हो सकते हैं. जैसे 2, 4 और ये. So first इसको 0 बना दो. तो 2 ये change नहीं होगा. ये 2 इसके अंदर आ जाता है 6. Okay. Next is ये 0 और ये भी 0 हो गया तो ये 10. So अगर सारे roots positive और negative भी हट जाएंगे and if everything becomes imaginary, so then this is the total possibilities. But the basic combination is 2, 4, 4. Okay. हर एक double double में pair में change होता है. That's the common formation of any root based equation structure. अब इसी के ऊपर एक दो सवाल और करेंगे. Sir, the negative one is 0 positive, 2 negative, or 3 imaginary. Next. Next is एक बहुत ही टफ चीज कॉन्सेप्ट में मैं जाऊंगा, बहुत आसानी से आप लोगों को समझाएंगे. One hard concept, very hard concept. How to prove an equation as an equation? How do you prove that? Almost an impossible job. Okay, so I came out with a very easy thing. मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा है x squared minus 3 mod x plus 2 equal to 0. Put x equal to 0. So 0 squared minus 3 mod of 0 equal to 2. Okay, this is the thing which is equal to 2 and that is not equal to 0. So write it down. Since the relation is not satisfied at x equal to 0, it is an equation. Not satisfied. ये तो चेक करने का स्टाइल हुआ, लेकिन थ्योरी क्या है? Is the relation not satisfied x equal to 0? So it's an equation. Normal तरीके से ऐसा है. If I write x square minus x equal to x, have a look. X square minus x equal to x. तो ये क्या हो जाएगा? X square equal to 2x. काट कूट के तो वही x minus 2 दो वैल्यू हो जाएगा, है ना? So ये x equal to 0 और x equal to 2 यही दोनों आ जाएगा. तो अगर मैं मान लो x के वैल्यू 0 ढूंढूंगा तो 0 square equal to 0 आ रहा है. So if 0 equal to 0 comes, it is not an equational system right now. So if
x square minus 2x if you put this thing in the LHS and you take common. So x equal to 0, 1 comes out and this finally comes out to be this. Now this is an equation. So here if you put x minus 2 equal to 0, this forms an equational structure. X equal to 0 is not the form. Okay, this shows a point, not an equational structure. So an identity is only happen if you put 0 and it is not giving you 0. Okay. So if fx theory क्या है ना अभी समझ में आ गया कर सकते हैं. So if fx equal to 0 is satisfied by every value of x in the domain of fx. अब ये डोमेन और रेंज क्या होता है? y इक्वल टू 2x प्लस 3. इसमें x का वैल्यू है 0 से 7 के बीच में. तो ये हो गया x का डोमेन. रेंज क्या हो गया? Put 0. So y equal to 3. Put 7. Y equal to 17. So 3 to y to 17 is the okay. স্যার লাইক তাহলে এক্স এর যে কোনো ভ্যালু মানে যেটা ডোমেনে এক্স হবে মানে সেটা যদি এফ এক্স ইকুয়াল টু 0 চলে আসে তাহলে সেটা কি আমরা ফাংশন বলতে পারবো তো? হ্যাঁ ধরতে পারবো, কিন্তু সেখানে x equal to 0 একটা আলাদা পার্ট হবে. ইটস নট স্যাটিসফাইড যেরকম আগেরটাতে হলো. ঠিক আছে, মানে স্যার ওটা একটা পয়েন্ট হবে, রাইট? ইয়া. ওকে. এবার পয়েন্টের জন্য কোঅর্ডিনেটের রেসপেক্টে দুটো পয়েন্ট রয়েছে. তাহলে এখানে x equal to 0 বসিয়ে y এর যে ভ্যালু আছে that will give you the respective points on this. Now what is the linearity of this kind of a pattern? So linearity we know that x equal to 1. Okay, linear means x equal to 1 power equal to 1. That's very easy. But what happens 1 by x equal to 72? Okay, x, these are all x equal to 1, but here x inverse equal to this. So x1 but not at x minus 1, because 1 by x equal to y. So xy equal to 1 is not a straight line. It's a rectangular hyperbola. The name is like this. तो ये होने से इक्वल टू होने से ही सेम हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज प्योरली क्वाड्रेटिक? कभी एक बार ऐसा में आया था. व्हाट इज प्योरली क्वाड्रेटिक? एनी आइडिया? A pure quadration means all are rich. It's a hint. So x square plus 7 is a pure quadratic. No x square plus ax tau. ये है नहीं, तो ये quadratic, pure quadratic. Otherwise, no. Minus 7. So Okay. all are rich. All are rich means here who is richest? In quadratic, square terms are richest. Okay. So all are rich means whenever there is x like this is also has a x, but x to the power 0. That is not x actually. So here in the actuation of the x, this is the thing. So if I say purely cubic, so then ax is cube plus 7 equal to 0. Even no square, no 1. Okay. But if someone told you that pure quadratic means ये भी नहीं रहेगा, ax is cube equal to 0, then it becomes a linear actually. So pure quadratic means there has to be a coefficient term. मतलब coefficient को भी छोड़ देगा ऐसा नहीं हो सकता. So at least a coefficient and the highest power. Okay.
The normal quadratic we all know. X square plus bx plus c जैसा हम लोग के पास है. That is minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. That is the roots values of alpha and beta. इसको लेके हम लोगों को दुविधा भी नहीं है, टेंशन भी नहीं. टेंशन स्टार्ट होगा इसके बाद से. ओके सर तो ये इक्वेशन इक्वेशन रिगाइड करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक इक्वेशन? बहुत सारे नए टर्म्स यहाँ पर आते हैं. सिमेट्रिक इक्वेशन, इज द इक्वेशन सिमेट्रिक? ये सिर्फ पूछ लिया तब भी अगर ये पता नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू से व्हाट इज सिमेट्रिक इक्वेशन. ध्यान से देखिए, मान लेते हैं सिमेट्रिक equation, symmetric or symmetric function of roots also, same thing as function of roots. कहा जा रहा है अगर इक्वेशन ऐसा है, मान लीजिए 3a स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर बीटा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस b. The equation remains the same if alpha beta changes its position. So if alpha beta interchange is possible. ठीक है. So if alpha beta interchange is possible, then only you can do it. जैसे यहाँ तो पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? देखिए, एक बार यहाँ इसका क्यूब तो यहाँ पर बीटा का क्यूब, एक बार इसका स्क्वायर और सिंगल, यहाँ पर इसका स्क्वायर सिंगल, इसका स्क्वायर. बट इज इट सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स? नॉट सिमेट्रिक. ठीक है. अच्छा, अल्फा पाई प्लस बीटा पाई को एक एक्सपेंशन में सिखा देता हूं जो आपको काम में आएगा. अल्फा पाई माइनस बीटा पाई इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. एक नया फॉर्मूला है, लिख लीजिए. सॉरी, ये प्लस में is a plus formula. Minus formula alpha square plus beta square alpha cube minus beta cube plus alpha square beta square alpha minus beta. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. Next, now some different level of equations. नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल इक्वेशंस.
मान लेते हैं इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ओके, और बोल रहा है फाइंड अनदर इक्वेशन whose roots are 2 more than these roots. ठीक है, 2 मोर देन बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स विथ 2 लेस, ये हो गया आंसर। सो वट एवर यू डू द ऑपोजिट, ठीक है। सो इफ या दैट्स इट, इसको एक्सपेंड करो, काम खत्म 1 सेकेंड में। अगर इफ इट इज नंबर 1 3 times, then replace x with 3 by. Next, half, then replace by 2x. उल्टा हुआ, whose roots are p alpha plus q and p beta minus plus q। तो क्या किया, कुछ मल्टीप्लाई भी किया, p मल्टीप्लाई किया और q प्लस किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन क्या बनेगा, उल्टा करना है, फर्स्ट माइनस कर दो और फिर डिवाइड करो, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। What happens if it is alpha to the power n and beta to the power n, हमें अगर दे दिया तो भी ये क्या होगा, x whole to the power 1 by n and then a square. Next,
Common root condition. This is a very hard thing again. So how to decipher the common root condition? Okay. देखते कॉमन रूट के ऊपर कितना कितना सवाल है. Have a look. X square bx, x square plus bx plus c equal to 0. And this okay. So the condition they have a common root. Condition क्या है? आपको सिर्फ ये याद रखना है. A prime, B prime into C BC AB BC CA. Easiest way. Square. That's it. ये फॉर्मेशन से भी याद रखना है. चलो इनकी बराबर condition that the roots are common. अब मान लो ऐसा दे दिया, एक इक्वेशन दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इक्वल टू 7 प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड अल्फा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0. फाइंड अल्फा इफ एनी वन ऑफ द रूट्स आर कॉमन. ये इसको पूरा डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे. ओके. व्हाट इज द कंडीशन दैट बोथ द रूट्स आर कॉमन? So what is the RHS of the first condition? CA. C. Great. Okay. अच्छा ये CA होगा, C प्राइम. So is the second root C prime and A prime or just CA? Sorry, CA, C prime, A prime. C के नीचे C, A के नीचे A. You see, both are same. Next. Both roots are common and very easy.
Then the last part today, as I said, graphical formation. How theory of equation can be solved by graph. Type 8. Graphs and theory of equation, type 8. So मान लेते हैं ठीक है दिस द थिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई 4 यार कुछ नहीं nothing. So y plus d by 4a is a into b by 2a square. Okay. So in this case, the shape of the graph is dependent on this formation. Okay. So the formation is if 1 by a greater than 0, that is a greater than 0, then it is parabolic but open upward. Anything. ऐसा. If 1 by a less than 0, then also parabolic but open downward. Okay. Now, there's a very important thing about the discriminant. That is b square minus 4ac. So discriminant अगर ऐसा हुआ a greater than 0 and discriminant is also greater than 0. The curve is like this. Intersecting. 2 points. If a less than 0 but b is still maintaining greater than 0. If d equal to 0, if a positive and d equal to 0, then only it will be touching. If a less than 0, d equal to 0, then also touching, but in this way. और अगर d नेगेटिव होता है तो
So if A negative and D also negative, then low. This is the thing. So, B/2 in a case study solve the lowest one. Next, greatest and highest point. If A greater than 0, least value is at x equal to minus b by 2a. And y least or minimum will be minus d by 4. Okay. तो रेंज क्या हो गया? Minus d by 4a to plus infinity. Okay. Next, if a negative, then the max value is at x equal to minus b by 2a. Greatest value is given by f of minus b by 2a is equal to minus d by 4a. That's the max value of y. Range क्या है? अगर किसी का माइनस डी बाई 4 ही मैक्सिमम है तो मिनिमम तो होगा माइनस इंफिनिटी. Done? Any questions? Next, sign of quadratic equation. This is the last part today, sign of the quadratic. That is fx equal to E. What is this you using? Huh? Fx equal to this. If A positive and D negative, ऐसा हुआ तो fx अपना पॉजिटिव होगा. ओके, कर्व कुछ ऐसा है. If A negative, D negative, fx negative. This is second. Third is 4 यहाँ पर लिखा देंगे, 6 है टोटल. A positive, D equal to 0, fx is greater than equal to 0. A negative, D equal to 0, fx is less than equal to 0. A positive, D positive. In that case, fx has two roots, alpha and beta. Yeah. And fx and positive, negative, both can be possibility. So fx greater than, less than 0 दोनों ही हो सकता है depending on the root range. यहाँ भी वही है. तो D पॉजिटिव होने से डायरेक्टली कहना नामुमकिन है. Yeah. That's it for today. Next class में we will do some more problems on this advanced theory of equation. So we have done the theory of equation, solution of the system we have done, number of solution of a system, and also algebraic. The basic theoretical part has been done. So problems of the past year, मतलब हम लोग से part 1 को खत्म किए हैं. Some types of the algorithm का 2 का, this is left. And I will do subjective as well.